प्यारे मित्रों नमस्कार। आज का कार्यक्रम हमारे लिए बहुत ही खास है। आज का कार्यक्रम हम आईसीसीआर फाउंडेशन डे यानी भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की स्थापना के रूप में मनाने जा रहे हैं। आईसीसीआर की स्थापना 9 अप्रैल 1950 को हुई, जिसकी नींव आधारशिला हमारे पहले शिक्षा मंत्री श्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब ने रखी। आईसीसीआर की स्थापना का एक ही उद्देश्य रहा और वो बिल्कुल साफ सुथरा कि हम अपनी सांस्कृतिक और साहित्यिक एवं शिक्षा धरोहर को अपने अंदर ही नहीं अपितु अपने मित्रों के साथ जो पूरे विश्व में हैं, दूसरे देशों के साथ साझा करें। इसी उद्देश्य के साथ आईसीसीआर की स्थापना हुई। आईसीसीआर पूरे विश्व भर में अपने सांस्कृतिक केंद्रों द्वारा इस रूपरेखा को सही रूप से प्रचलित करने की और अपने सांस्कृतिक धरोहर को बांटने की चेष्टा करता है। जैसा कि हमने बताया कि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद जो कि विदेश मंत्रालय के समन्वय के साथ कार्यरत होती है और आज की डेट के अंदर माननीय श्री सशस्त्र बुद्धे साहब, डॉक्टर सशस्त्र बुद्धे जी जो प्रेसिडेंट आईसीसीआर हैं, प्रशासनिक रूप से माननीय डीजी साहब जो श्री दिनेश पटनायक जी एवं उनके सहयोगी, सभी के प्रयत्न से इन कार्यक्रमों की रूपरेखा को तैयार किया जाता है, संचालित किया जाता है और पूरे विश्व भर में इनको संजोया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना पैंडेमिक सिचुएशन ने पूरे विश्व की परिस्थितियों को बदल दिया है। तो आज के सभी कार्यक्रम, आजकल के सभी कार्यक्रम जो कि आप जानते हैं कि ऑनलाइन प्रस्तुत किए जा रहे हैं, नेहरू सेंटर ने भी उसी ओर चलते हुए इन परिस्थितियों को एक चैलेंजिंग रूप में लिया और मार्च शायद 2020 से लेकर आज तक हम उसी का अनुसरण करते हुए अपने कार्यक्रमों की रूपरेखा को तैयार करते हैं और आगे बढ़ रहे हैं। आज का कार्यक्रम हमारे लिए बहुत ही खास है। मैं थोड़ा सा उससे पहले भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, उसके उद्देश्यों के बारे में बताना चाहूँगा। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि इसका उद्देश्य अपने पड़ोसी देशों में नहीं अपितु पूरे विश्व भर में सांस्कृतिक समन्वय के साथ साथ अपनी साहित्यिक और शिक्षा प्रणाली को साझा करना है। उसी के तहत भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद सेमिनार, सिंपोजियम और स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स कराती है। समय समय पर विशेष विषयों के ऊपर, सब्जेक्ट्स के ऊपर इन मूल्यों को, इन विषयों को हम बड़े सही रूप से आंकते हैं और उनकी समीक्षा करने के साथ साथ उनके नोट्स तैयार किए जाते हैं। अपने रीजनल ऑफिस जो कि पूरे भारतवर्ष में स्थापित किए गए हैं भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा। आज की डेट में शायद 20 से ज़्यादा हमारे कल्चर सेंटर्स कार्यरत हैं और 17 रीजनल ऑफिस हैं जो कि पूरे प्रयत्न के साथ इस रूपरेखा को तैयार करते हैं और संचालित करते हैं। इसके साथ साथ पिछले वर्ष की मैं जरूर बात करूंगा। माननीय श्री दिनेश पटनायक जी ने जब से इस भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है, अनेक ऊंचाइयों को संगठित किया है और अनेक ऊंचाइयों को तक पहुंचने की चेष्टा करी है, जिसमें उन्होंने एक रिफॉर्मेशन के तरीके हमारी जो स्कॉलरशिप पॉलिसी है उसको डेवलप किया है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है। उसके साथ साथ एजुकेशनल पर्सपेक्टिव्स को ऑनलाइन के चलते हुए टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए, जो आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके तहत अभी लेटेस्ट लिटिल गुरु, जिसमें हम बहुत ही फक्र के साथ कह रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम को शिक्षा प्रणाली में तब्दील करते हुए पूरे विश्व में उसको संचालित करने की एक व्यवस्था बना रहे हैं। इसके साथ साथ पिछले वर्ष में हमारे अनेक कार्यक्रमों में, जैसे कि इंटरनेशनल योगा डे जो 21 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, उसमें पूरे विश्व भर में कार्यक्रम सांस्कृतिक संबंध परिषद के द्वारा किए गए। इंडोलॉजी कॉन्फ्रेंस और अनेक कार्यक्रमों को सांस्कृतिक संबंध परिषद ने संपूर्ण किया, जो बहुत ही उच्च स्तर पर सराहनीय किए गए। नेहरू सेंटर जो कि लंदन में स्थित है, एक इकाई है सांस्कृतिक केंद्रों की,
जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसको चैलेंज करते हुए हमने शायद 70 से ज़्यादा कार्यक्रमों को ऑनलाइन में तब्दील किया, और आप सभी के सहयोग से वो इतने सराहनीय रहे। जो शिक्षा पद्धति में हमने जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर कार्यक्रम किया, हमने हील दी वर्ल्ड टू ओवरकम फ्रॉम द कोविड, ये एक हमारा स्पेशल कार्यक्रम था जिसमें अनेक महान हस्तियों ने पार्टिसिपेट किया। मैं बहुत नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत जैसे हमारे साथ विश्वमोहन भट्ट जी थे, माननीय अवस्थी जी थी, सुनीता भुरियन जी थी। अनेक ऐसे कार्यक्रम हमने स्थापित किए। इसके साथ साथ हमने योगा कार्यक्रमों को स्थापित किया। आईसीसी द्वारा संचालित वीडियो ब्लॉगिंग कंपटीशन में हमने योगा कंपटीशन कराया, पेंटिंग कंपटीशन कराए, ऐसे कंपटीशन कराए, जिसमें भारतीय उच्चायोग का संपूर्ण सहयोग हमें मिला, और उनके प्रशासनिक निर्देशों के अनुसार, उनकी शिक्षा के अनुसार, उनकी तहत काम करते हुए नेहरू सेंटर ने अनेक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की और संचालित किया, जिसमें सबसे ज्यादा योगदान माननीय हमारे वर्तमान निदेशक श्री अमीश त्रिपाठी जी, उनका सहयोग रहा। उनकी एक नीति शैक्षणिक पद्धति की तरफ बहुत ही उच्च स्तरीय उनकी सोच है। बुक लॉन्च, जिसको हम किताबों की परिभाषा में कहें तो एक खजाना उन्होंने दिया। अनेक किताबों को नेहरू सेंटर के जरिए हमने लॉन्च किया, जो आज विश्व भर में पहचानी जाती हैं। उस शिक्षा पद्धति के ऊपर भी हमने कार्य करा, सांस्कृतिक कार्यक्रम की रूपरेखा को तैयार करा। इसी के चलते हुए आज मैं बहुत फक्र से कहता हूँ, हमारे साथ इस आईसीसीआर फाउंडेशन डे को मनाने के लिए श्रीमती इंद्रानी दत्ता, जो कि कथक रूप से स्पेशलाइज हैं, विदुषी शाश्वती सेन जी एंड पंडित बिरजू महाराज जी की शिष्या रही हैं। उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर अनेक कार्यक्रमों को संयोजित किया। हम आज बहुत गर्व के साथ उनके साथ इस कार्यक्रम को साझा कर रहे हैं। नेहरू सेंटर, भारतीय उच्चायोग बहुत ही उनके लिए आभार प्रकट करता है, और उनके सहयोग के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम को की संचालित रूपरेखा को तैयार करने के लिए धन्यवाद। मैं आज के इन्हीं शब्दों के साथ इसको समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि ये कार्यक्रम आज आपको बहुत पसंद आएगा। धन्यवाद, नमस्कार। Namaste. My name is Amish Tripathi and I'm the director of the Nehru Centre, London. As I'm sure many of you are aware, the Nehru Centre, London is a part of ICCR, Indian Council for Cultural Relations, which itself is a part of the Ministry of External Affairs of the Government of India. ICCR has been working for many decades to improve and increase cultural exchange between India and the rest of the world. And the Nehru Centre, London is the largest center of ICCR anywhere in the world. It is therefore with pride that we celebrate ICCR Foundation Day on this 9th of April. We put together a program for you in partnership with our associates, and we do certainly hope that you will enjoy it. Thank you. Namaste, friends, and thank you for joining us today when we celebrate the foundation of the ICCR in 1950 and also the launch of the London Basant Festival. The ICCR and the London Basant Festival are aligned in their ethos. It is through art, culture, and creativity we find a deeper meaning within ourselves and also with the world outside of us. It reminds us to respect the past, seize the present, and embrace the future. The ravages of 2020 was part of the impetus behind the London Basant Festival. Many conversations between my fellow artists here at home and abroad took place. We felt the global pain and we found solace through creativity. It is this power of positivity, friendship, love, and creativity that we want to share with you. The Nehru Centre's support brings added strength to the festival. I thank them
for all that they have done. My Guruji, Vidusi Saraswati Sen, sends us her good wishes and blessings from Delhi. I send Saraswati Di my love and pranam. The festival's creative team is based in the US, UK, and India. This would not have been possible without them. I thank them from the bottom of my heart. All the artists today are accomplished in their own fields, but it is their tenacity to follow their art in troubled times that makes them stand out. Of course, they are not the only ones. It takes great courage to find the single lotus amidst the dark mud. This is the reason the emblem of the festival is a single lotus. There is a strong classical base to the festival, and it is wide enough to welcome other repertoire. The works and philosophy of Nobel laureate Rabindranath Tagore acts as a protective shade for us. It is this reason that his works feature in various ways through the festival. Without further ado, I wish you all a wonderful season ahead. Sit back, relax, enjoy the show, and stay with us. Thank you. Namaskar. It is so exciting to know that a new festival is coming up, the London Basant Festival, celebrating springtime through dance, music, poetry, and all sorts of arts. It is truly very, very interesting to know because India and United Kingdom have always had strong ties and strong connections in the field of art and culture. I have witnessed so many beautiful festivals over the last so many years that I've visited London especially. Many organizations have been instrumental in bringing these cultural ties closer, of which Nehru Centre has always played a very important role. I'm happy to know that this year, this festival is starting on Sunday, 14th of February, and it is not going to be only this year. We hope that this festival will continue for several years from now onwards. The topic that has been chosen is again very appropriate for this festive spring season. It is on love, feelings, romantic feelings, feeling of togetherness, feeling of collective goodwill. So many compositions have been written by several poets across the globe on this subject. In our Kathak tradition, various compositions by a great doyen and the godfather of Kathak, Gindadev Maharaji, and which celebrates the Holi or the Color Festival also. The Sakhi says, मैं तो खेलूंगी उन्हीं से, मैं तो खेलूंगी उन्हीं से, मैं तो खेलूंगी उन्हीं से, होली गुइया, मैं तो खेलूंगी उन्हीं से, होली गुइया, मैं तो खेलूंगी उन्हीं से, उन्हीं से, उन्हीं से, होली गुइया, मैं तो खेलूंगी. She does not want to play with anyone else other than Krishna, her beloved. And now talking about Bhanu Singher Padavali by Tagore.
the great poet, the Nobel laureate. How beautifully he has described the beloved, the lover, as death, the ultimate union which every creature which takes birth has to unite with that Lord. And the words say, Maranare, Maranare, tu hu mama, shyam sama. Maranare, tu hu mama, shyam sama. Megha varana tujha, megha jata juta. रक्त कमल कर रक्त अधर पुट ताप विमोचन करुण कोर तब ताप विमोचन करुण कोर तब मृत्यु अमृत करे दान. The poet says, death is like a nectar, is the ultimate bliss which everyone should celebrate and not fear from. So, the thought of the great person to believe in love with the divine. So, there are so many beautiful poetries, so many beautiful compositions, which I'm sure everyone will in their own way celebrate through their work. I wish everyone, Indrani is my student and is instrumental in putting some things together. I'm sure collectively the whole team will do a great job. And perhaps sometime I will also join this beautiful festival in future. Namaskar. Basant 2021. Indrani Datta Dance and friends celebrate spring and new beginnings. On the day when the lotus bloomed, alas, my mind was straying, and I knew it not. My basket was empty, and the flower remained unheeded. Only now and again a sadness fell upon me, and I started up from my dream and felt a sweet trace of a strange fragrance in the south wind. That vague sweetness made my heart ache with longing, and it seemed to me that was the eager breath of the summer seeking for its completion. I knew not then that it was so near, that it was mine, and that this perfect sweetness had blossomed in the depth of my own heart. I have had my invitation to this world's festival, and thus my life has been blessed. My eyes have seen, and my ears have heard. It was my part at this feast to play upon my instrument, and I have done all I could. Now I ask, has the time come at last when I may go in and see thy face and offer thee my silent salutation? छवि श्याम सुंदर बरनत छवि श्याम सुंदर बरनत छवि श्याम सुंदर ऐसो
मोह का रसाल ऐसो मोह का रसाल वरनत छवि श्याम सुंदर वरनत छवि श्याम सुंदर लसत अंग पीतव सन लसत अंग पीतव सन बंक भ्रिकुटी गरमाल बंक भ्रिकुटी गरमाल शीश मुकुट कर बंसी शीश मुकुट कर बंसी केसर को तिलक बाल केसर को तिलक बाल केसर को तिलक बाल वरनत छवि श्याम सुंदर वरनत छवि श्याम सुंदर लचक चलत चपल चाल लचक चलत चपल चाल चंचल नयन विशाल चंचल नयन विशाल नूपुर ध्वनि गुंजत पग नूपुर ध्वनि गुंजत पग नूपुर ध्वनि गुंजत पग नूपुर ध्वनि गुंजत पग निरतत हरि दत्तान निरतत दत्तान निरतत हरि दत्तान वरनत छवि श्याम सुंदर दन दन ब्रज श्याम कहे दर्शन करि नंदलाल 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 वरनत छवि श्याम सुंदर वरनत छवि श्याम सुंदर श्याम सुंदर श्याम Srimati Chandra Chakraborty has been trained at the ITC Sangeet Research Academy, Kolkata, by her eminent gurus, the late Pandit A. Kanan and the late Malavika Kanan. Chandra Chakraborty has given Khyal and Thumri a new vibrancy and has created a distinct style of her own. She was a scholar at the Sangeet Research Academy between 1987
and 1991. She then later moved to Johannesburg on an ICCR fellowship as a teacher of Indian music at the Indian Consulate. Since being based in the UK, she has performed across the country and in Europe, as well as continuing her teaching and delivering music workshops. While managing one of London's busiest libraries, she's also the founder and CEO of Kalakar Arts UK, a well-regarded classical music performance and teaching organisation, gaining a strong following after productions such as Saraswati, Daughter of Tansen, and Akhtari, the musical. Her remarkable dedication to the promotion and education of Indian classical music led her to creating the popular Guru Shishya Parampara, an online series during lockdown featuring maestros and rising talent from India and the diaspora. मुझसे बरजो श्याम घूंघट पर खोली रे मुझसे बरजो श्याम घूंघट पर खोली मुझसे बरजोरी मुझसे बरजोरी श्याम श्याम रे श्याम घूंघट पर खोली रे श्याम श्याम घूंघट पट खोली रे श्याम 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 घूंघट पट खोली रे मुझसे बरजोरी रे बरजोरी श्याम घूंघट पर खोली रे श्याम मुझसे बरजोरी रे मुझसे बरजोरी रे श्याम श्याम घूंघट पट खोली पट खोली श्याम घूंघट पट खोली रे श्याम श्याम मुझसे बरजोरी
मुझसे पर जोरी मुझसे पर जोरी श्याम रे मुझसे पर जोरी रे श्याम मुझसे पर जोरी रे श्याम श्याम घूंघट बंद खोली मुझसे पर जोरी रे श्याम मुझसे पर जोरी मुझसे पर जोरी श्याम घूंघट पट खोली रे मुझसे पर जोरी मुझसे पर जोरी पर जोरी रे श्याम घूंघट बंद खोली
नंद नंदन धन ऐसो ढीठ लंगरवारे ऐसो ढीठ लंगरवारे ऐसो ढीठ लंगरवारे नंद नंदन धन ऐसो ढीठ लंगरवारे हमसे करत छक छोरी शाम हमसे करत छक छोरी शाम हमसे करत छक छोरी शाम हमसे करत छक छोरी हमसे करत छक छोरी शाम शाम घुंघट पट खोली शाम घुंघट पट खोली शाम घुंघट पट खोली वर जोरी शाम घुंघट पट खोली रे शाम घुंघट पट खोली शाम घुंघट पट खोली रे शाम घुंघट पट खोली रे शाम घुंघट पट खोली रे कर जो शाम घुंघट पट खोली रे कर जो रे शाम घुंघट पट खोली रे शाम Bijayini Chaudhary Biswas is a postgraduate from Rabindra Bharati University, Kolkata, and is now based in London. She began the art of poetry recitation from a very early age, and her recitation training has been received from the late Sakwat Hossain Khan. She then continued further training with Utpal Datta, a well-known Bengali artist in this field. Her recitation performances have taken her to prestigious auditoriums such as Rabindra Sadan, Nazrul Manch, Girish Manch, and many others. Vijayini is versatile in her repertoire and brings her style of recitation to both classical and modern poetry. Her grasp of Bengali literature and Bengali theatre gives a particular depth to her rendition. This recitation for us depicts a couple in love in the countryside, sharing all their joys, sorrows, and all the bounty of nature. বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এক গায়ে আমরা দুজন একটি গায়ে থাকি, সেই আমাদের একটি মাত্র সুখ। তাদের গাছে গায়ে যে দোয়েল পাখি, তাহার গানে আমার নাচে বুক। তাদের দুটি পালন করা ভেড়া চড়ে বেড়ায় মোদের বটমূলে। যদি ভাঙে আমার ক্ষেতের বেড়া, কোলের পরে নেই তাহারে তুলে। আমাদের এই গ্রামের নামটি খঞ্জনা, আমাদের এই নদীর নামটি অঞ্জনা। আমার নাম তো জানে গায়ের 5 জনে, আমাদের সেই তাহার নামটি রঞ্জনা।
দুইটি পাড়া বড়ই কাছাকাছি, মাঝে শুধু একটি মাঠের ফাঁক। তাদের বনের অনেক মধুমাছি, মোদের বনে বাঁধে মধুর চাক। তাদের ঘাটে পূজার জবা মালা ভেসে আসে মোদের বাঁধা ঘাটে। তাদের পাড়ার কুসুম ফুলের ডালা বেচতে আসে মোদের পাড়ার হাটে। আমাদের এই গ্রামের নামটি খঞ্জনা, আমাদের এই নদীর নামটি অঞ্জনা। আমার নাম তো জানে গায়ের 5 জনে, আমাদের সেই তাহার নামটি রঞ্জনা। আমাদের এই গ্রামের গলি পড়ে আমের বলে ঘরে আমের বন। তাদের খেতে যখন তিসি ধরে মোদের খেতে তখন ফোটে শোন। তাদের ছাদে যখন ওঠে তারা আমার ছাদে দক্ষিণ হাওয়া ছোটে। তাদের বনে ঝরে শ্রাবণ ধারা, আমার বনে কদম ফুটে ওঠে। আমাদের এই গ্রামের নামটি খঞ্জনা, আমাদের এই নদীর নামটি অঞ্জনা। আমার নাম তো জানে গায়ের 5 জনে, আমাদের সেই তাহার নামটি রঞ্জনা। Gaurika Mathur grew up in the northeast of India and in her profession has trained as a lawyer. Her dance training began with Bharatanatyam and she obtained her Visharad from Bhatkhand University, Lucknow. She then began learning Odissi under the guidance of her guru, Srimati Madhulita Mahapatra. Gaurika has performed at prestigious platforms like the Indian High Commission, Houses of Parliament, House of Lords, New Scotland Yard for the Metropolitan Police, and many other notable institutions. She has been felicitated with the Nritya Sri Award and featured in the Indian Talent magazine in 2015 and 2018. For her, dance is a rejuvenating therapy that heals and helps to express emotions as well as to love and live life. Here, we see a graceful choreography to a composition from Rabindranath Tagore's Bhanu Singher Padavali, depicting a maiden entranced by the beauty of Lord Krishna, his melodious flute, and how all of nature is singing together with love. गहन कुसुम कुंज माझे मृदुल मधुर वंशी बाजे बिसरि त्रास लोक लाज सजनिया आलो। गहन कुसुम कुंज माझे कुसुम कुंज माझे पिनः चारु नीलवास हृदय प्रणय कुसुम रास हरिण नेत्रे विमल हास हरिण नेत्रे विमल हास कुंजवन में आलो। गहन कुसुम कुंज माझे ढाले कुसुम सुरभ धार ढाले बिहग सुरभ सार ढाले इंदु अमृत धार विमल रजत भाति रे मंद मंद भृंग गुण रे अजुत कुसुम
कुसुम कुंजे कुंजे फुटल सजनी पूंजे पूंजे फुटल सजनी पूंजे पूंजे बहुल ज्योति जाते गहन कुसुम कुंज माझे देख लो सखी श्याम राय नयने प्रेम उथल जाय मधुर बदन अमृत सदन चंद्रमायनी छे सजनी वृंद राह सखी श्री गोविंद सजनी वृंद राह सखी श्री गोविंद श्याम को पदारविंद श्याम को पदारविंद भानु सिंह बंदी छे गहन कुसुम कुंज माझे मृदुल मधुर बंसी बाजे विसरि त्रास लोकराजे सजनिया आनो गहन कुसुम कुंज माझे Megha Raut is a Mumbai-based sitar player and a disciple of sitar maestro Purbain Chatterjee. Her former gurus are Mrs. Deepti Mishra and Pandit Madan Shankar Mishra. She gained her bachelor's degree in Hindustani music, sitar, from Miranda House, Delhi University, and completed her master's in performing arts, also sitar. She is an awardee of National Scholarship for Sitar in the junior category, as well as an awardee of the Scholarship for Young Artists in Sitar by the Ministry of Culture. She has attended many music festivals and performed in many national competitions in India and on various international stages. She was the runner-up in the 19th National Youth Festival, Bandhav, and represented Delhi, held in Assam. She has been an artist in All India Radio and performed in the 140th Hari Ballav Sangeet Samara. From the last few years, she has been composing and collaborating with different artists, musicians and bands, exploring and welcoming new genres of music other than Indian classical music. Yet, she has kept her original genre, Hindustani classical music, preserved and intact. Moonlight is her first single, which she has released on YouTube in 2020.
Rishi Banerjee is born and raised in Manchester, UK. Since the age of 3, his training in Rabindra Sangeet and Bengali music was received from his mother, Bollari Banerjee. At the age of 14, he started his training with Shantiniketan exponent Srimati Pramita Mallik, who continues to guide and mentor him. Rishi also trains in Hindustani classical music from Sri Chiranjeev Chakrabarti and Dhrupad from Pandit Falguni Mitra. Having performed internationally with the esteemed artists such as Pandit Birju Maharaj Ji, Rizwana Chaudhary Banna, and Irish folk singer Anna Tanvir, Rishi has been featured on TV in Kolkata on various channels, including Doordarshan, Tara TV, and Akash Art. He has also released 3 albums, most recently Eternity, a collection of songs from the Gitanjali, which was unveiled by film legend Sharmila Tagore in UK. In 2012, Rishi established Surangan, dedicated to teaching Rabindra Sangeet to students of diverse ages and communities, spreading the music and philosophy of the great bard.
If the day is done, if birds sing no more, if the wind has flagged tired, then draw the veil of darkness thick upon me, even as thou hast wrapped the earth with the coverlet of sleep and tenderly closed the petals of the drooping lotus at dusk. From the traveller, whose sack of provisions is empty before the voyage is ended, whose garment is torn and dust-laden, whose strength is exhausted, remove shame and poverty, and renew his life like a flower under the cover of thy kindly night. Rahul Deb is a dance artist from Tripura. In the early years, he received his training from Sri Babul Sarkar and folk dance training from Sri Mukunda Das Bhattacharjee. Rahul's training in Lucknow Gharana Kathak was received from Guru Chinmoy Das, and further training in Kathak was received from various notable gurus, including Srimati Bhaswati Misra, Pandit Arjun Misra, and Pandit Rajendra Gangani. Rahul has gained a Nritya Visharad in Kathak and diploma in folk dance from Bhatkhand Sangeet Vidyapit, a Visharad in Rabindra Nitya from Prachin Kala Kendra Chandigarh, and a master's from Tripura University. He has performed at prestigious and key state, national and international festivals. Among his awards, he was the Nritya Nandan by Sur Nandan Bharati in 2013 for the first position in solo Kathak dance at Tripura University. Rahul has his own dance academy, Ghunguran, in Tripura, and he organizes 2 classical festivals each year. Here, we see a serene choreography based on a composition from Rabindranath Tagore's Bhanusingher Padavali on the beautiful Radha and her allure. सुंदरी राधे आओ बनी, सुंदरी राधे आओ बनी, ब्रजरमणि गणमुकुटमणि, ब्रजरमणि गणमुकुटमणि, सुंदरी राधे आओ बनी, सुंदरी राधे आवे बनी।
कुञ्चित केशिनी निरुपम वेशिनी रस आवेशिनी भांगिनी रे कुञ्चित केशिनी निरुपम वेशिनी रस आवेशिनी भांगिनी रे अधर सुरंगिनी अंग तरंगिनी संगिनी नव नव रंगिनी रे सुंदरी राधे हवे बनी सुंदरी राधे हवे बनी कुञ्जरगामिनी मोतिमदशनी दामिनी चमकनिहारिणी रे अभरणधारिणी नव अविसारिणी श्यामर हृदय विहारिणी रे श्यामर हृदय विहारिणी रे नव अनुरागिनी अखिल सुहागिनी पंचम रागिनी मोहिनी रे नव अनुरागिनी अखिल सुहागिनी पंचम रागिनी मोहिनी रे रास विलासिनी हास विकासिनी गोविंद दास चित सोहिनी रे सुंदरी राधे हवे बनी सुंदरी राधे हवे बनी ब्रजरमणि गण मुकुटमानी ब्रजरमणि गण मुकुटमानी सुंदरी राधे हवे बनी आज राधा ब्रिज को चली आज राधा ब्रिज को चली राधा ब्रिज को चली आज ब्रिज को चली राधा ब्रिज को चली जमुना जमुना के तले रामा राधा ब्रिज को चली आज राधा ब्रिज को चली राधा ब्रिज को चली चले Anirban Bhattacharya is a Hindustani classical vocalist of the Patiala tradition and a junior ethnomusicologist from Kolkata, a senior disciple of Padma Bhushan Pandit Ajay Chakrabarti. Anirban is a President of India Gold and Silver Medalist from All India Radio in Khyal and Tumri, and Champion in Tumri from State Music Academy in 2010. Anirban is also a national scholar in Rabindra Sangeet
and had the opportunity of learning from and performing with the legendary Kathak maestro Padma Vibhushan Pandit Birju Maharaj Ji all over India and abroad. Anirban is presently a PhD scholar from Shiv Nadar University, and his academic research on music focuses on the musicological works of Raja Sir Shorendra Mohan Tagore from Calcutta and Bandish Tumri of Lucknow. फूल रही सरसों सघन मन 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 अमु अमोले के सुखोले अमु अमोले के सुखोले अमु अमोले के सुखोले गोरी करत श्रृंगार गोरी करत श्रृंगार मालनिया लेके आई करसों सघन वन फूल रही सरसों सघन वन फूल रही सरसों सघन वन फूल रही सरसों सघन वन सरसों फूल रही सरसों सघन वन फूल रही सरसों सघन वन फूल रही सरसों सघन वन फूल रही सरसों तरह तरह के फूल खिले हैं तरह तरह के फूल खिले हैं ले गरबा हाथन में लाए ले गरबा हाथन में लाए निजामुद्दीन के दरवाजे पर निजामुद्दीन के दरवाजे पर आवन कही गए अशक रंग अब बीत गए बरसों सघन मन फूल रही सरसों सघन वन फूल रही सरसों मनी धनी सारे निदा मगा मरी ग सारे निदा निदानी पामा पानी धानी सारे निसा फूल रही सरसों निनी पामा पका मनी धनी सा मगा म सारे निसा धानी मा पानी धानी सा निदानी सा फूल रही सरसों सघन वन तेरे जाने सा नी पामा पा मेरे जाने सा मगा मरे जाने सा नी पामा पा नी गा मनी जानी जाने नी सा फूल रही सरसों फूल रही सरसों फूल रही सरसों कलियन संग करदार रंग रलिया कलियन संग करदार
रंग रलिया कलियन संग करदा रंग रलिया कलियन संग करदा रंग रलिया कलियन संग करदा रंग रलिया भवर गुंजारे फूली फुलवारे चहुवार मोर बोले कोयल की कूक सोनी होक उठी कलियन संग करदा रंग रलिया कलियन संग करदा रंग रलिया कलियन संग कलियन संग कलियन संग कलियन संग करदा रंग रलिया लहरात हरे लहरात सब बिरछन मोरी रे नार करवा भरन आई आज बाग में पुकार इन वाले राम बोले हर बार बार कलियन संग करदा रंग रलिया कलियन संग करदा रंग रलिया रंग रलिया रंग रलिया Sanjiti Das is originally from Kolkata and is trained in Odissi under Guru Muralidhar Majhi and creative dance under the legendary Mamata Shankar. When Prime Minister Narendra Modi came to visit London, Sanjiti had the chance to perform for him and Prince Charles. For the last few years, she has presented opening dance performances for the Diwali on the Square show at Trafalgar Square, London. In 2018, Sanjiti was featured in BBC Sunday Morning Live's special live programme. She has also been part of performances held at the Royal Festival Hall for the Alchemy Festival, the Royal Albert Hall with Baitak UK, and NABC Houston in 2015. Since being based in London, Sanjiti has been teaching dance for various institutions and is now a part of the Sutton College Adult and Family Learning Team. She teaches special needs children and adults through dance movement therapy. Sanjiti is also an accomplished presenter. She has appeared on various Bengali channels as an anchor for magazine shows. In 2006, she received the Kalakar Award for Best Anchoring for her travel show on TV in India. And in 2007, she was the main anchor in Edmonton, Canada at the Bangla Utsav. She continues to carry on her stage presentation through corporate shows and festivals. She recites for us on the theme of love. রেলগাড়ির কামরায় হঠাৎ দেখা, ভাবিনি সম্ভব হবে কোনোদিন। আগে ওকে বারবার দেখেছি, লাল রঙের শাড়িতে ডালিম ফুলের মতো রাঙা, আজ পরেছে কালো রেশমের কাপড়, আঁচল তুলেছে মাথায়, দোলন চাপার মতো চিকন গৌর মুখখানি ঘিরে। মনে হলো কালো রঙের একটা গভীর দূরত্ব ঘনিয়ে নিয়েছে নিজের চারদিকে, আর সে দূরত্ব সর্ষে ক্ষেতের শেষ সীমানায় শালবনের নীলাঞ্জনে। থমকে গেল আমার সমস্ত মনটা। চেনা লোককে দেখলাম অচেনা গাম্ভীর্যে। হঠাৎ খবরের কাগজ ফেলে আমাকে করলে নমস্কার, সমাজবিধির পথ কেন খুলে আলাপ করলেন সে, কেমন আছো, কেমন চলছে সংসার ইত্যাদি। সে রইল জানলার বাইরের দিকে চেয়ে, যেন কাছের দিনের ছোঁয়াচ পার হওয়া চাহনিতে। দিলে অত্যন্ত ছোট দু একটা জবাব, পুরোটা বা দিলেই না। হাতের অস্থিরতায় বুঝিয়ে দিলে, কেন এসব কথা, তার চেয়ে অনেক ভালো চুপ করে থাকা। আমি ছিলাম অন্য এক বেঞ্চিতে ওর সাথীদের সঙ্গে। একসময় আঙুল নেড়ে ডাকলো কাছে আসতে। মনে হলো সাহস কম না, বসলো ওর এক বেঞ্চিতে। গাড়ির আওয়াজের আড়ালে বলল মৃদু স্বরে, কিছু মনে করো না,
সময় কোথা সময় নষ্ট করার? আমাকে নামতেই হবে পরের স্টেশনে। দূরে যাবে তুমি, দেখা হবে না আর কোনোদিন। কিন্তু যে প্রশ্নটার জবাব এতকাল ধরে থেমে আছে, শুনবো তোমার মুখে। সত্য করে বলবে তো? আমি বললাম, বলবো। বাইরের আকাশের দিকে তাকিয়েই শুধু, আমাদের গেছে যে দিন, একেবারেই কি গেছে? কিছুই কি নেই বাকি? একটুকু রইলেন চুপ করে, তারপর বললেন, রাতের সব তারাই আছে দিনের আলোর গভীরে। খটকা লাগলো, কি জানি বাড়িয়ে বললাম নাকি। ও বলল, থাক এখন ওদিকে যাই। সবাই নেমে গেল পরের স্টেশনে, আর আমি চললেন একা। Shaoli Dasgupta is a scientist by profession. She is also a graduate in Bharatanatyam, having trained in dance from Darpan Academy under the supervision of Mrinalini and Mallika Sarabhai. Shaoli has experience in performing classical, contemporary and folk dance forms for audiences in India, UK and Australia. Here, Shaoli has choreographed and danced to a beloved composition from Bhanushingar Padavali. The song depicts the scene of maidens mesmerized by the approaching form and sounds of Lord Krishna. They adorn themselves with blooms, make garlands, and wait in anticipation for their beloved Shyam. सजनी सजनी राधिकालो देख अब चाहिया। सजनी सजनी राधिकालो देख अब चाहिया। मृदुल गमन श्याम आवे मृदुल गान गाहिया। सजनी सजनी राधिकालो देख अब चाहिया। सजनी सजनी राधिकालो सनी 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 धप मगम देख अब चाहिया। धप धप मगरे गरे मृदुल गमन श्याम आवे निस सारी रे गा गा मम प मृदुल गान गाहिया। सजनी सजनी राधिकालो देख अब चाहिया। मृदुल गमन श्याम आवे मृदुल गान गाहिया। पीनह झटित कुसुमहार पीनह नील आंगिया। पीनह झटित कुसुमहार पीनह नील आंगिया। सुंदरी सिंदूर देखे सीते करह रागिया। सजनी सजनी राधिकालो देख अब चाहिया। सहचरी सब नाच नाच मिलन गीत गाओ रे। चंचल मंजीर रब कुंज गगन छाओ रे। सजनी अब उजाड़ बदिर कनक दीप झालिया। सजनी अब उजाड़ बदिर कनक दीप झालिया। सुरभि करह कुंज भवन गंध सलिल ढालिया। सजनी सजनी राधिकालो देख अब चाहिया। मल्लिका चमेली बेली कुसुम तुलह बालिका। गांठ जूथी गांठ जाति
नाथ बकुल मालिका ऋषिथ नयन भानु सिंह कुंज पथम चाहिया ऋषिथ नयन भानु सिंह कुंज पथम चाहिया मृदुल गमन श्याम आवे मृदुल गान गाहिया सजनी सजनी राधिकारो देख अब हो चाहिया मृदुल गमन श्याम आवे मृदुल गान गाहिया सजनी 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 राधिकालो देख अब हो चाहिया सजनी सजनी राधिकालो देख अब हो चाहिया Born in Kerala and brought up in Mumbai, Abhay Nayampally belongs to a musical family and plays several instruments. Jazz, blues, John McLaughlin, Django Reinhardt, Joe Pass, and B.B. King are among his first influences. Abhay then started to explore South Indian or Carnatic classical music, a difficult art form, and developed a new, unique, expressive and vigorous style of this Carnatic music on the guitar. He then met his guru and mentor, the legendary mandolin maestro Vidwan U. Srinivas, under whose close guidance Abhay created his new style of playing and is currently the only Carnatic guitar artist in the world performing and teaching the U. Srinivas Bani style of playing on the electric guitar. Apart from his solo concerts, Abhay has played alongside Ustad Tawfiq Qureshi, Pandit Hari Prasad Chaurasia, Sri Purbayan Chatterjee, Shankar Mahadevan, Pandit Yogesh Samsi, Louis Banks, Gino Banks, Rakesh Chaurasia, and many, many more. He regularly records for films and ad campaigns and is a recipient of the title Sangeeta Kalaratnam, Jewel of the Art of Music. Abhay exclusively plays on a Fender Stratocaster, bringing out the richness and texture of Carnatic classical while maintaining its purity. He is dedicated to passing on the legacy of his guru through the guitar to his students in India and across the world.
Jaimini Sahai began her Kathak training in the UK with Nilima Devi MBE, following the Jaipur style. She gained her diploma in Kathak and went on to perform the Kathak Manch Pravesh, a solo debut performance. Since then, she has set up her company Aradhana in 2010 and continues her training with Padma Shri Pratap Power MBE in the Lucknow style of Kathak. In addition to performing this beautiful dance form, Jaimini is a teacher of Kathak, holding regular classes and workshops. She balances her Kathak dance alongside a full-time career as an information systems delivery consultant. For us, Jaimini performs a beautiful Tumri, penned by Pandit Bindadin Maharaj and sung by Pandit Birju Maharaj on Holi, showing the playful interactions between Radha and Krishna. The choreography is by Vidushi Durga Arya.
किन रंग में गोरी मुख हमारी है गोरी, किन रंग में गोरी मुख हमारी है गोरी, राधे पूछत मेरी कर गोरी, राधे पूछत मेरी कर गोरी, कान में हो कहाँ सिवारी गुया करते हो कहाँ। ऐसी होरी गुया, ऐसी होरी गुया ऐसी होरी गुया काशी कहो नहीं मानूंगी मोहन, काशी कहो नहीं मानूंगी मोहन, कौन सखी तेरी कौन सखी, ऐसी मेरी दुनिया भर के कहाँ ऐसी मेरी दुनिया भर के कहाँ। ऐसी होरी गुया, ऐसी होरी गुया, ऐसी होरी गुया कहाँ ऐसी होरी गुया तेरी छोटी गुंगाई मांग मोती भराई, तेरी छोटी गुंगाई मांग मोती भराई, करी चूरी पिन्हाई सारी दीनी ओढ़ाई, करी चूरी पिन्हाई सारी दीनी ओढ़ाई, देखो आरती बिंदा शाम करती पूरी है मेरी की कोई गान Ash Mukherjee is a critically acclaimed dancer and choreographer. His choreographic works include The Flood music video for Katie Melua and William Orbit, Royal Wedding Duet for So You Think You Can Dance, BBC, and Margate Margam for Margate Festival Turner Prize 2019. Awards include Best Male Dancer India 1994, nominations for Outstanding Dancer Male by Critics Circle National Dance Award UK, and Time Out London Rising Talent. As an actor, he has worked with director Shekhar Kapoor on Will, a series based on the life of William Shakespeare, produced by TNT. He is also a poet and mental health blogger. This piece we shall hear now is written by Ash during lockdown. Ta Ti
Tanam, Tata, Tade, Tatum, Tanam. All warmed up, with nothing to sing, all dressed up, with nowhere to go, all limbered up, with nowhere to dance, except inside. No, I mean inside. Let's go inside. After the last email has been sent, in this quietly severe winter of discontent, stewing in this collective lockdown lament, let's go inside. You go sit on that naughty step and think about what you've done, said Mother Nature to the toddler that is humanity. So, blow out the candles, switch off the screens, let all our worries stop their incessant tap dancing on our spleens, even if only for a moment, and let's go inside. Diem recipient, not carpe diem. Do break the shackles of this invisible regime and let's go inside. Let's receive the inhale. Let's receive the exhale. Let's move slowly like some glorious drowsy whale and let's go inside. Inside there is a cave of wealth, a softer approach for feelings that needs must be felt. A serenity comes where we reign sovereign, and when our eyes can finally open, the true play can really begin. So let's go inside. Let us chant the mantra of T.S. Eliot and the Vedantas. Let us draw up the gates like the fort at Golconda, and let's go inside. The vines will grow in this wasteland we call home. Let us stay in the shadows and write leisurely tomes, and let's go inside. A fire will run behind us, said old Nostradamus, and some of us will end up in the Isle of Sunny Thanatos. From here we will orchestrate a true liberation, so let us all retreat for this very internal coalition. Let's go inside. Let's put the tree up, let's all deck the halls, but above all, let's cultivate an inner festival. Let's go inside. From inside, let the message go within and around and within and far and wide. Let's go inside. Let the virus of busyness be vanquished forthwith. Let us discover that busyness is all but a myth. You're a human being, not a human doing, you will find. Let your heart take over so your mind can unwind. Let's go inside. They have colonized your breath. They have colonized your mind. But they cannot colonize the jewels you will find if you go inside. Let the singing, dancing, adornment commence.
Tak kita taka dik kita taka tom kita taka nam kita taka. Not for anyone, but for you. Who else? Drigum takita dinta. Sight, sound, hear, taste, and touch. Bring these 5 horses home when it all gets too much. Let's go inside. From here, let us read the book of the ages. Let our spines tingle while our hearts turn the pages. You will know in your bones when your horses are ready. Your heart will be smiling. Your hand will be steady. You will ride your chariot through peace and through war, leading a Shanti to Shanti like Krishna and Arjuna. Let's go inside. From here, let us sit and watch the world go by. For here, there is an inner world from where we do not have to try. Let the poems, paintings emerge from this space. Do not be afraid, for here there is only grace. In this space, you will relax your hypervigilante, for in this place there is only Om Shanti. Shanti, Shanti. Let's go inside. Let's go inside. Let's go inside. Life of my life, I shall ever try to keep my body pure, knowing that thy living touch is upon all my limbs. I shall ever try to keep all untruths out from my thoughts, knowing that thou art that truth which has kindled the light of reason in my mind. I shall ever try to drive all evils away from my heart and keep my love in flower, knowing that thou hast thy seat in the inmost shrine of my heart, and it shall be my endeavour to reveal thee in my actions, knowing it is thy power gives me strength to act. Aindrila Ghosh trained in Bharatanatyam under Guru Thankamani Kutty of Kalamandalam, Kolkata, as well as the Shantiniketan style of Rabindrik dance and Manipuri dance from Srimati Purnima Ghosh, Aindrila's mother. The result is a commingling of these styles into a beautiful form of expressive dance with lilting elegance. Here we see a new choreography by Aindrila to a beloved song by Rabindranath Tagore, originally written by Maithili poet Vidyapati. The song harks to the monsoon season and the painful separation of the soul from its beloved. भराबादर महाभादर शून्य मंदिर मोर भराबादर महाभादर शून्य मंदिर मोर भरा
মনে খর সর হান্তিয়া পুলিশ শত শত মাতমোদিত ময়ূর নাচত মাতিয়া ময়ূর নাচত ময়ূর নাচত ময়ূর নাচত মাতিয়া मत दादुरी डाके डाहू की हाट जावत छातिया तिमिर दिदा भरी घोरयामिनी अथिर बिजुरी का पातिया विद्यापति कहे कैसे गायबी हरि बिने दिन रातिया भरा बादर महाभादर शून्य मंदिर मोर भरा बादर. Dr. Imtiaz Ahmed has been a torchbearer for the songs of Rabindranath Tagore in the UK for many years. He has built his school of music, Anandadhara Arts, into a haven for music lovers who are nurtured to fulfill their musical potential and dreams. During 2020, Dr. Ahmed has been tireless in bringing the repertoire of Tagore for the enjoyment and education of the wider public through a series of online shows and festivals. In his other life, Dr. Ahmed is a lead cancer clinician and consultant oncologist dedicated to the treatment and recovery of his patients. শুনতে কি শুধু কেবল ফোটা ফুলের মেলা শুনতে কি শুধু কেবল ফোটা ফুলের মেলা দেখিস নে কি শুকনো পাতা ঝরা ফুলের খেলা বসন্তে কি শুধু কেবল ফোটা ফুলের মেলা যে ঢেউ উঠে তারি সুরে বাজে কি গান সাগর জুড়ে যে ঢেউ পাড়ে তাহারও সুর যাচ্ছে সারা বেলা বসন্তে কে শুধু কেবল ফোটা ফুলের মেলা আমার প্রভুর পায়ের তালে শুধুই কি রে মানিক জালে আমার প্রভুর পায়ের তালে শুধুই কি রে মানিক জালে চরণে তার লুটিয়ে কাঁদে লক্ষ মাটির ঢেলা
আমার গুরুর আসন কাছে সুবোধ ছেলে কজন আছে অবোধ জানে কোল দিয়েছেন তাই আমি তার চেলা বসন্তে কি শুধু কেবল ফোটা ফুলের মেলা দেখিস নে কি শুকনো পাতা ঝরা ফুলের খেলা বসন্তে কি শুধু কেবল ফোটা ফুলের মেলা। Arundhati Mukherjee is a journalist, spoken word artist, writer, and presenter. She has written on many subjects, both in fiction and non-fiction, and is a self-proclaimed dreamer. With an open and brave attitude to the world, she became a journalist in Kolkata, and since then has lived and written in various other places, including the Middle East. She is now settled in the north of England and is part of the ION TV news team. Arundhati has continued to write, perform, and collaborate, and has become a popular personality in the UK. Here, we hear an expert recitation of Hori Kala by Rabindranath Tagore, a touching story in poetry form. Like Arundhati, if you believe in being your own hero, then the words will ring true. Hello everyone. In spite of all odds, I'm extremely happy to be able to celebrate Holi and Women's Day this year in this way, performing on this esteemed platform. I will be presenting Rabindranath Tagore's Hori Kala. The poem Hori Kala is based on a historic account of 700 years ago. Perched on the bank of the river Chambal, Kota was seized by Kesar Khan, the Pathan ruler from Malwa. King Bhunag was incapacitated with the excessive use of wine and opium. His wife, with his household staffs and 60 villagers, retired to Ketun. When spring came, the queen planned to organize Holi and invited the Pathans, who were, needless to say, elated by the invitation to play Holi with the charming queen and her Rajputani maidens. This poem, in my interpretation, is more about women empowerment than of victory. Here, in contrast to the much prevalent Jauhar practice of that time, we find a queen who can well take care of herself, turns into her own hero in times of crisis, and reclaims the land lost by her husband in battle. পত্র দিল পাঠান কেশর খাঁড়ে, কেতুন হতে ভুনাগ রাজার রানী। লড়াই করে আশ মিটেছে মিয়া, বসন্ত যায় চোখের উপর দিয়া। এসো তোমার পাঠান সৈন্য নিয়া, হরি খেলবো আমরা রাজপুতানি। যুদ্ধে হারি কোটা শহর ছাড়ি, কেতুন হতে পত্র দিল রানী। পত্র পড়ি কেশর উঠে হাসি, মনের সুখে গোঁফে দিল চারা। রঙিন দেখে পাগড়ি পরে মাথে, সুরমা আঁকি দিল আঁখির পাতে। গন্ধ ভরা রুমাল নিল হাতে, সহস্রবার দাড়ি দিল ঝাড়া। পাঠান সাথে হরি খেলবে রানী, কেশর হাসি গোঁফে দিল চারা। ফাগুন মাসে দক্ষিণ হতে হাওয়া, বকুল বনে মাতাল হয়ে এলো। বোল ধরেছে আমের বনে বনে, ভ্রমর গুলো কে কার কথা শোনে। গুনগুনিয়ে আপন মনে মনে, ঘুরে ঘুরে বেড়ায় এলোমেলো। কেতুনপুরে দলে দলে আজি
পাঠান সেনা হরি খেলতে এলো। কেতনপুরে রাজার উপবনে তখন সবে ঝিকিমিকি বেলা। পাঠানেরা দাঁড়ায় বনে আসি, মূল তানেতে তান ধরেছে বাঁশি। এলো তখন 100 রানীর দাসী, রাজপুতানি করতে হরি খেলা। রবি তখন রক্ত রাগে রাঙা, সবে তখন ঝিকিমিকি বেলা। পায়ে পায়ে ঘাগরা ওঠে দুলে, ওড়না ওড়ে দক্ষিণে বাতাসে। ডাহিন হাতে বহে ফাগের থারি, নিবি বন্ধে ঝুলিছে পিচকারি। বাম হস্তে গুলাব ভরা ঝাড়ি, সারি সারি রাজপুতানি আসে। পায়ে পায়ে ঘাগরা ওঠে দুলে, ওড়না ওড়ে দক্ষিণে বাতাসে। আঁখির ঠারে চতুর হাসি হেসে, কেশর তবে কহে কাছে আসি। বেঁচে এলেম অনেক যুদ্ধ করি, আজকে বুঝি জানে প্রাণে মরি। শুনে রানীর শতেক সহচরী, হঠাৎ সবে উঠল অট্ট হাসি। রাঙা পাগড়ি হেলিয়ে কেশর খাঁ, রঙ্গ ভরে সালাম করে আসি। শুরু হলো হরির মাতামাতি, উঠতেছে ফাগ রাঙা সন্ধ্যা কাশে। নববরণ ধরল বকুল ফুলে, রক্ত রেণু ঝরল তরু মূলে। ভয়ে পাখি কুজন গেল ভুলে, রাজপুতানির উচ্চ উপহাসে। কোথা হতে রাঙা কুজ্ঝটিকা, লাগলো যেন রাঙা সন্ধ্যা কাশে। চোখে কেন লাগছে না কো নেশা, মনে মনে ভাবছে কেশর খাঁ। বক্ষ কেন উঠছে না কো দুলি, নারীর পায়ে বাঁকা নুপুর গুলি। কেমন যেন বলছে বেসুর বুলি, তেমন করে কাঁকন বাজছে না। চোখে কেন লাগছে না কো নেশা, মনে মনে ভাবছে কেশর খাঁ। পাঠান কহে রাজপুতানির দেহে কোথাও কিছু নাই কি কোমলতা। বাহু যুগল নয় মৃণালের মতো, কণ্ঠস্বরে বজ্র লজ্জা হত। বড় কঠিন শুষ্ক স্বাধীন যত, মঞ্জরিহীন মরুভূমির লতা। পাঠান ভাবে দেহে কিংবা মনে, রাজপুতানির নাই কোমলতা। তান ধরিয়াই মন ভূপালিতে, বাঁশি বেজে উঠল দ্রুত তালে। কুণ্ডলেতে দোলে মুক্তামালা, কঠিন হাতে মোটা সোনার বালা। দাসীর হাতে দিয়ে ভাগের থালা, রানী বনে এলেন হেন কালে। তান ধরিয়াই মন ভূপালিতে, বাঁশি তখন বাজছে দ্রুত তালে। কেশর কহে তোমারই পথ চেয়ে, দুটি চক্ষু করেছি প্রায় কানা। রানী কহে আমারও সেই দশা, 100 সখী হাসিয়া বিবসা। পাঠানপতির ললাটে সহসা, মারেন রানী কাঁসার থালা খানা। রক্তধারা গড়িয়ে পড়ে বেগে, পাঠানপতির চক্ষু হলো কানা। বিনা মেঘে বজ্র রবের মতো, উঠল বেজে কারা না কারা। জ্যোৎস্নাকাশে চমকে ওঠে শশী, ঝনঝনিয়ে ঝিকিয়ে ওঠে অসি। সানাই তখন দ্বারের কাছে আসি, গভীর সুরে ধরল কানারা। কুঞ্জবনের তরু তলে তলে, উঠল বেজে কারা না কারা। বাতাস বেয়ে ওড়না গেল উড়ে, পড়ল খসে ঘাগরা ছিল যত। মন্ত্র যেন কোথা হতে কেড়ে,
বাহির হলো নারী সজ্জা ছেড়ে, 100 বীর ঘিরল পাঠানেরে, পুষ্প হতে 100 সাপের মতো, স্বপ্ন সম ওড়না গেল উড়ে, পড়ল খসে ঘাগরা ছিল যত। যে পথ দিয়ে পাঠান এসেছিল, সে পথ দিয়ে ফিরল না কো তারা। ফাগুন রাতে কুঞ্জ বিতানে, মত্ত কোকিল বিরাম না জানে, কেতুনপুরে বকুল বাগানে কেশর খাঁয়ের খেলা হলো সারা। যে পথ দিয়ে পাঠান এসেছিল, সে পথ দিয়ে ফিরল না কো তারা। Shritama Mukherjee is a talented young artist specializing in the North Indian classical dance form of Kathak. She began her training under Guru Abhay Shankar Misra at the Bhavan Centre in West Kensington, London, and continued her training with her Guru and Guruma Kakuli Shankar Misra to attain the level required to perform her solo Kathak debut performance, the Manch Pravesh, in 2019. Here we see a gorgeous Kathak-based choreography to a Tagore song from Bhanushingar Padavali, which is actually a monsoon season favorite. London's springtime is known for its showers and its romanticism, and it is this mood that aligns so nicely with the monsoon showers of the East. शांगन गगने घोर घन घटा घटा शांगन गगने घोर घन घटा निशीत यामिनी रे शांगन गगने घोर घन घटा कुंज पथे सखी कैसे जाब कुंज पथे सखी कैसे जाब अबला कामिनी रे शांगन गगने घोर घन घटा मद पवने यमुना तरजित घन घन गरजित में दमकत बीजुत पथ तरुलुंठित हर हर कंपित देहा घन घन रिमझिम 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 घन घन रिमझिम 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 बरखत नीरद पुंज
शाल पियाले ताल तमाले निबिड़ति मीरमय कुंज कहरे सजनी ये दुर्योगे कहरे सजनी ये दुर्योगे कुंजे निर्दय का दारुण बाशी का बजायत सकरुण राधाना मोती महारे वेश बना दे सीधी लगा दे वाले पुरहि विलुंठित लोलच पुरमम बांधह चंपक माले Triparna Mukherjee is a versatile vocal artist specializing in the Hindustani classical repertoire from the Mewati Gharana. Her training has been received from several disciples of Pandit Jasraj ji. At present, she's training with Shirshendu Mukherjee, who is a disciple of Pandit Ajay Chakravarti. Triparna came to London to study at the LSE and has since then joined a global corporation in London to build a promising career. At the same time, she has been dedicated to her art and has been creating innovative new performances, bringing Indian classical music to a wider Western audience. Her melodious and lyrical style of singing matches the repertoire beautifully. Namaskar, welcome to Basant 2021. I sincerely thank my dearest Didi, Indrani Datto, to have asked me to sing for Basant 2021. I'm going to present a small Holi Pad in the Rag Manj Khamaj, composed and penned by Sangit Martand Pandit Jasraj ji. I hope you really enjoy it. Thank you.
बीच डगर मोरे लाज लई रे, बीच डगर मोरे लाज लई रे, ऐसी ठेठ नाड़ी ऐसी ठेठ नाड़ी ना माने खेला हो न जाने नंद को बिहारी कारो नंद को बिहारी 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 नंद को Nick Howard is a police detective with artistic leanings. He rekindled his enthusiasm for theatre after a long absence at the Basant Centre. In a theatre production, working with the creatively gifted Dr. Bhaskar Dasgupta on 2 productions. Nick has featured in 3 productions at the South London Theatre, including the lead role in Cecil Taylor's Good. During lockdown, Nick became a member of London's Cervantes Theatre and has trained around the works of Federico García Lorca. In the autumn of this year, he will join Rose Bruford College to pursue further training in acting. Nick sees theatre as an escape from the relentless nature of police work, and in order to educate himself regarding writing from both the UK and abroad, whose work inspires him to become a better performer. My heart aches and a drowsy numbness pains. My senses as though of hemlock I had drunk, or emptied some dull opiates to the drains. 1 minute passed and the Leith wards had sunk. 'Tis not through envy of thy happy lot, but being too happy at thine happiness, that thou, light-winged dryad of the trees, in some melodious plot of beechen green and shadows numberless, singest thou of summer in full-throated ease. Oh, for a draught of vintage that hath been cooled a long age in the deep-delved earth, tasting of flora and the country green, dance and Provençal song and sunburnt mirth. Oh, for a beaker full of the warm south, full of the true, the blushful hippocrene, with beaded bubbles winking at the brim, and purple-stained mouth, that I might drink and leave the world unseen, and with thee fade away into the forest dim. Fade far away, dissolve and quite forget what thou amongst the leaves hast never known, the weariness, the fever, and the fret. Here where men sit and hear each other groan, where the palsy shakes the sad last few grey hairs, where youth grows pale and spectre thin and dies, where but to think is to be full of sorrow, and leaden-eyed despairs, where beauty cannot keep her lustrous eyes, or new love pine at them beyond tomorrow. Away, away, for I will fly to thee, not charioted by Bacchus and his pards, but on the viewless wings of poesy. Though the dull brain perplexes and retards, already with thee tender is the night, and haply the queen moon is on her throne, clustered by all her starry fays, but here there is no light, save from what heaven is when the breeze is blown through verdurous glooms and winding mossy ways. I cannot see what flowers are at my feet, nor what soft incense hangs upon the boughs, but an embalmed darkness guess each sweet, wherewith the seasonable month endows,
the grass, the thicket, and the fruit tree wild, the white hawthorn, the pastoral eglantine, fast fading violets covered up in leaves, and mid-May's eldest child, the coming musk rose full of dewy wine, the murmurous haunt of flies on summer eves. Darkly I listen, and for many a time I have been half in love with easeful death, called him soft names in many amused rhyme, to take into the air my quiet breath. Now more than ever seems it rich to die, to cease upon the midnight with no pain, whilst thou art pouring forth thy soul abroad in such ecstasy, still wouldst thou sing, and I have ears in vain, for thy high requiem become a sod. Thou wast not born for death, immortal bird, no hungry generations tread thee down. The voice I hear this passing night was heard in ancient days by emperor and clown. Perhaps the self-same song that found a path through the sad heart of Ruth, when sick for home she stood in tears amid the alien corn. The self-same that oft times hath charmed magic casements opening on the foam, in perilous seas, in fairy lands forlorn. Forlorn, the very word is like a bell that tolls me back from thee to my soul's self. Adieu, the fancy cannot cheat so well as she is famed to do, deceiving elf. Adieu, adieu, thy plaintive anthem fades, past the near meadows, over the still stream, up the hillside, and now 'tis buried deep in the next valley glades. Was it a vision or a waking dream? Fled is that music. Do I wake or sleep? This is my prayer to thee, my Lord. Strike, strike at the root of penury in my heart. Give me the strength lightly to bear my joys and sorrows. Give me the strength to make my love fruitful in service. Give me the strength never to disown the poor or bend my knees before insolent might. Give me the strength to raise my mind high above daily trifles, and give me the strength to surrender my strength to thy will with love. The finale to the London Basant Festival is a joint recitation from the Nobel-winning collection Gitanjali by Rabindranath Tagore. Prathama, Dithi and Arya have been learning Kathak as students of Indrani Datta dance. Prathama loves arts and crafts. Dithi loves to draw. Arya loves to play classical music. Their commitment to Kathak has seen them perform at various large venues to new musicals such as Warriors and Mishtis. They help to host student baitaks, musical gatherings in London, where live music and dance is shared with collaborators and mentors. They wish you all a beautiful, happy and healthy spring and year ahead, and invite your support in their future creative endeavors. That I should make much of myself and turn it on all sides, thus casting coloured shadows on thy radiance. Such is thy Maya. Thou settest a barrier in thine own being, and then callest thy seventh self in myriad notes. This thy self-separation has taken body in me. The poignant song is echoed all through the sky, in many-coloured tears and smiles, alarms and hopes. Waves rise up and sink again, dreams break and form.
In me is thine own defeated self. This screen that thou hast raised is painted with innumerable figures, with the brush of the night and day. Behind it, thy seat is woven in mysteries of curves, casting away all barren lines of straightness. The great pageant of thee and me has overspread the sky. With the tune of thee and me, all the air is vibrant, and all ages pass. With the hiding and seeking of thee and me,